Hey guys, welcome back to our channel. So, in today's video in our studio, we will see how to create a CRM tool, a customer relationship management tool, and how to edit the data, how to delete data, how to add data in that, how to add buttons in that. Okay, so it will be basically a website which has the CRM tool in it. Okay, और उसमें कुछ graphics भी हम लोग add करेंगे. ठीक है. तो एक CRM टूल बनाने के लिए सबसे पहला तो उसको हम एक वेबसाइट पर डालेंगे तो हमें शाइनी पैकेज का जरूरत है. ठीक है. एंड सिंस वी वांट टू ऐड ग्राफिक्स सम ग्राफिक्स टू इट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डीटी पैकेज का यूज करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पास डीटी पैकेज नहीं है आर स्टूडियो में, देन फॉर दैट यू हैव टू गो टू द पैकेज एंड देन इंस्टॉल इट, or you can either install it by this, like install.packages dt, like I have done. Okay, and next क्या काम है, next our work is first of all to give data to the CRM tool and then to design the user interface for the tool and then the server logic. Okay, so first part is I have to tell our studio key we want to work with Shiny package. Okay, so library Shiny and library dt, these two are for the Shiny package, and for interactive data tables we are using the dt library. Okay, then we have to store some data to the customer relationship management tool, right? So ये example में हम ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे पास already कुछ data है and then I can add some more data to it, like additional rows or column to it and edit or delete it. Okay, so this is my predefined data. So I have taken a variable customer और उसके अंदर एक data frame है. ठीक है, ये, and it has an ID from 1 to 5. That means I have total number of 5 names, 5 email address and 5 phone numbers. Okay, so ये मेरा data हो गया. Next, if I move on, I have to define the user interface first of all, like how my tool should look like, the CRM tool which I'm going to create, how it should look. Okay, so उसका टाइटल कैसा दिखना चाहिए, साइड बार कैसा आना चाहिए, साइड बार में क्या क्या बटन्स होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें. सो आई हैव टेकन द टाइटल एज CRM टूल विद ग्राफिक्स. ठीक है, और उसका साइड बार का जो पैनल है उसमें सबसे पहला तो आएगा नाम, ईमेल नंबर एंड देन एट लास्ट फोन नंबर. ठीक है, और उसके बाद 3 एक्शन बटन्स आई हैव पुट. सो फर्स्ट एक्शन बटन इज फॉर एडिंग द कस्टमर्स, देन फॉर एडिटिंग द कस्टमर एंड देन फॉर डिलीटिंग द कस्टमर. सिमिलरली यू कैन पुट द एक्शन बटन ऑफ योर चॉइस. ओके, सो ये हो गया साइड बार लेआउट कैसे दिखेगा. okay, in the user interface. Next हो गया मेरा main panel. So when you are done with the title panel, the sidebar layout, you have to go to the main panel and make sure you're using these brackets properly. Okay, if you won't, then the output will be like there may be an error in your code. Okay, so main panel, सबसे पहला क्या करना है, प्लॉट करना है आउटपुट. सो कस्टमर प्लॉट एंड देन DT आउटपुट कस्टमर टेबल. दैट मीन्स ये मेन पैनल जो है ना, ये बेसिकली ग्राफ दिखाएगा कस्टमर का. ओके, वट एवर कस्टमर्स आर देयर इन दी CRM टूल, इट विल शो यू देयर. Okay, now that I have done with the user interface and storing of the customer record into my CRM tool, next I will go how to add it, how to edit it. So for that I have to give some logic to my tool. So for that I have written server logic. So for that I should have an input and output session. This is normal like we use in a Shiny package. So server equal to function and then input output and then sessions. Okay, नाउ रिएक्टिव डेटा फ्रेम्स फॉर द कस्टमर को बनाने के लिए कैसे, मतलब रिएक्टिव मतलब वो इट शुड बी मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं. वो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ वेरिएबल रिएक्टिव कस्टमर्स एंड देन इनसाइड दैट रिएक्टिव कस्टमर्स वी हैव टू गिव इट लाइक इनपुट. ओके, लाइक वी हैव टू गिव इनपुट टू ऐड कस्टमर बटन. ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बटन लिया है, सो ये एक्शन कैसे काम करेगा, लाइक we do in the HTML cases. कोई अगर हम बटन डाल रहे हैं HTML टैग में, then for that to make the button functional you have to give some logic, right? So similarly यहाँ पे वो logic क्या है, न्यू कस्टमर और उसके अंदर डेटा फ्रेम है ID, उसका मांगेगा, नाम मांगेगा, ईमेल मांगेगा एंड देन द फोन नंबर मांगेगा. एंड देन कस्टमर्स में R बाइंड का यूज कर रहे हैं. व्हाट इट विल डू, जो पुराना सेट ऑफ मेरे पास जो डेटा है दैट इज दिस वन. ओके, दिस सेट ऑफ डेटा में
आर बाइंड के हेल्प से हम न्यू डेटा को उसमें ऐड कर सकते हैं. दैट इज वाई द आर बाइंड फंक्शन इज यूज ओवर हियर. सो आर बाइंड कस्टमर्स कॉमा न्यू कस्टमर. ओके. और उसके बाद क्या करता है वो, जैसे ही आप ऐड कस्टमर करोगे ये वो फील्ड क्लियर हो जाएगा एंड देन द कस्टमर विल बी एडेड. Okay, similarly you have to do with the edit and you have to do with the delete customers as well. Okay, now that we are done with this, मेरा नेक्स्ट काम क्या है, आपको या फिर उस टूल को लॉन्च करना. So I'll simply write shiny and then app and then inside that I'll write UI comma server. ठीक है, and then enter. Once I press enter, I have the tool in front of me. अब देखो ये टूल कैसे दिख रहा है. This will be the side bar layout, this is the main panel and this is the data which we have already given. So you can see over here 10 entries है यहाँ पे आपका functional tab है, यहाँ पे search tab है in which you can search. Okay, and then here the buttons are there, add customer, edit and delete, and then suppose check करते हैं कैसे काम करता है ये. So let's take a name like Sam and then the email address, any email address you can give. I'll just take the same one so that my table looks good, and then phone number. ठीक है, and then I'll click on add customer. अब यहाँ पे देखोगे it's not showing the customer which I have added. So for that अब क्या कर सकते हो, because it's a tool, right? So यहाँ directly जाकर के आप अपने ऐप को reload कर सकते हो. So just look at the last row, number 6, Sam, and then the example and then the number is being added. So इस तरीके से आप अपना खुद का टूल बना सकते हो and then you can because we have only less number of data over here, that's why the customer ID and values are not showing here the graph. If you add more and more of data, यहाँ पे उस तरीके से ग्राफ शो करेगा. So ये एक आपका खुद का CRM टूल बन जाएगा. Then you can add, edit, delete customer, और भी फंक्शनलिटीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको और किस तरीके का कोडिंग के बारे में जानना है, whether it's related to R Studio, Python or any other programming language. Okay, I'll be happy to help you out. Okay, so we'll meet you in the next video with another topic. Till then, don't forget to subscribe to our channel. Thank you.